Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको मार्केटिंग मिक्स के बारे में बताती हूँ। यू नो व्हाई? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ माय स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रमोशन। अगर मैं बच्चों को पूछती हूँ व्हाट इज मार्केटिंग, वो बोलते हैं मार्केटिंग इज एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट एंड सेलिंग इट। नो, मार्केटिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's. It is first creating the product, fixing the right price for the product, then advertising or using any other promotion methods, and the last one is distributing the product. ये चारों के बिना मार्केटिंग पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता है मार्केटिंग और प्रमोशन वन एंड द सेम है। तो सबसे पहले तो मैं ये डाउट क्लियर करती हूँ। सो मार्केटिंग इन्वॉल्व्स 4 P's और आजकल तो एक 5th P भी है, पैकेजिंग। प्रमोशन मिक्स जो है उसमें सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं आता, उसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स है। सो लेट अस लुक इनटू ऑल द एलिमेंट्स। क्या क्या एलिमेंट्स है? पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। ये 5 मेजर है। So let us look into them one by one. First one, publicity. What is publicity? Publicity is paid form. ध्यान से सुनो, paid form of non-personal representation of ideas, goods and services. मतलब क्या होता है? जब हम पे करते हैं और कोई हमारे लिए हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, एंड इट इज नॉन पर्सनल। नॉन पर्सनल मतलब एक मार्केटर 1000 से भी ज्यादा उसके व्यूअर्स या रीडर्स, उसे पब्लिसिटी कहते हैं। पब्लिसिटी कहाँ कहाँ किया जाता है? न्यूज़पेपर में, मीडिया पे। जैसे मैंने एडिटर को अप्रोच किया कि मुझे एक आर्टिकल लिखना है, तो एडिटर बोलेगा ठीक है, आपको इतना स्पेस मिलेगा न्यूज़पेपर में और आप आर्टिकल लिख सकते हैं, बट आपको इसके लिए इतना इतना रुपीस भरना पड़ेगा। तो ये हो गया पब्लिसिटी। इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। वी ऑल आर वेरी अवेयर ऑफ व्हाट एडवर्टाइजिंग इज। एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे टाइप्स है। ये प्रिंट मीडिया में किया जाता है, इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। यू सी टीवी एड्स, वी लिसन टू रेडियो एड्स, we also see ads in cinema halls, we see advertisements in form of posters and wall paintings and everything and anything. So what is advertisement? Advertisement is also a paid form of non-personal communication of ideas, goods and service by an identified sponsor. जैसे कि आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का मीनिंग होता है, अगर लैक्मे का एडवर्टाइज चल रहा है तो मुझे पता है लैक्मे HUL का ब्रांड है, मींस HUL हैज डेफिनेटली पेड फॉर दैट एडवर्टाइजमेंट। और ये नॉन पर्सनल है। नॉन पर्सनल मतलब 1-to-1 नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स यू आर क्लियर। द थर्ड पॉइंट इज पर्सनल सेलिंग। व्हाट इज पर्सनल सेलिंग? इट इज सेल्समैनशिप, जहां पे personally, this is a personal form of communication or personal form of promotion wherein the salesperson comes to you and convinces you to buy the product. It is one-to-one communication. We all are aware of the salesman coming at our home, we all are aware of the salesman in the retail shops and so on. Next is sales promotion. What is sales promotion? It is any form of promotion other than advertising, publicity, PR and personal selling. Let us take few examples. Discounts, buy one get one free, combo offers. आपने कोलगेट का देखा रहेगा, टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश। ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, जहां पे आप जाते हो, स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। बाद में कॉन्टेस्ट, ये फॉर्म भरो और आप सलमान खान के साथ
बातें करने का मौका पाइए, सच टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट। आप ये फॉर्म भरो, आप ये कॉन्टेस्ट में हिस्सा लो और आपको 2 मूवी टिकट्स फ्री मिलेगा। सो ऑल दिस थिंग्स, प्राइस कट्स, प्राइस डिस्काउंट्स, यू नो फ्री, आपको जो फ्री प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं वो भी प्रमोशन में आता है। सो एवरीथिंग इज ऑल दिस which is other than advertising, personal selling, publicity and PR is sales promotion. Last point is public relations. Okay, for a marketer, who are public? Customers, suppliers, government, retailers, wholesalers, dealers, competitors, media people and so on, and general public of course. ये सब पब्लिक के साथ जब भी आपको अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है एंड यू टेक एफर्ट्स, it is called as public relations. I will give you an example of a very good brand wherein कोई प्रॉब्लम हुआ था बीच में एंड बिकॉज ऑफ द क्वालिटी इस पे एक कॉन्ट्राडिक्शंस आया था। एक नूडल्स है और फिर कंपनी ने बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे नूडल्स पूरे टेस्टेड होके आते हैं, और वैसे एड्स बनाए थे जस्ट टू मेंटेन गुड रिलेशंस विथ ऑल पीपल, मीडिया, कस्टमर्स एंड सो ऑन. This is called as public relations. Public relations can be done in form of one to one, it can be done in form of one to many, it can be done in form of advertising and so on. I hope students now you are clear what all is included in promotion mix. I would just repeat for you. It includes personal selling, sales promotion, publicity, advertising and public relations. So if you like my video, stay in tune with Ekeeda and subscribe Ekeeda for more videos. Thank you.